हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे चल रही है केमिस्ट्री? आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। फिलहाल अभी पता नहीं कोविड के कारण क्या क्या होगा, मेरे बोर्ड के एग्जाम्स हो या ना हो, बट हमने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। राइट बेटा? अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो भी आपको बहुत प्रिकॉशन के साथ रहना है। मास्क यूज करना है, सैनिटाइजर यूज करना है और फ्रेंड्स से दूरी बना के रखनी है। काफी बहुत टाइम हो गया आप सबको फ्रेंड्स से मिले हुए, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ जितनी दूरी बनाओगे उतना लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स के साथ रहोगे। बच्चे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है? अगर हम इसको देखें तो दिस इज द green rich phenomenon that occurs at the interference of surface। मतलब वो फिनोमिना जो कि सरफेस पर होता है उसको कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। राइट बेटा? अगर हम देखें इसमें दो तरह के शब्द यूज होते हैं। एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? तो बताइए जरा, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? मतलब जो कि सरफेस पे बल्क में हुई चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे इट refers to the accumulation of a substance substances at the surface then in the bulk। राइट? ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। इट रिफर्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन, मतलब इट रिफर्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? अब ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? मीन्स it involves it involves accumulation of a substance in the bulk then at the surface। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस है, it refers to the accumulation of a substance at the surface in the bulk। सरफेस पर बल्क में होता है, और एब्जॉर्प्शन में इन द बल्क एट द सरफेस। राइट? सब्सटेंस एक्यूमुलेशन होता है इन द बल्क एट द सरफेस होता है। राइट? समटाइम्स बोथ एब्जॉर्प्शन and absorption occurs say simultaneously। Simultaneously called called George called George। Right? The accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of the solid or liquid is termed adsorption। The molecular species or substance which concentrate or accumulate at the surface is termed adsorbate, and material on the surface of which adsorption takes place is called adsorbent। Right? Right? यहीं पर हम एक वर्ड और पढ़ते हैं, रिवर्स का। रिवर्स का मीन्स द reverse process of adsorption is called desorption। रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाता है? desorption। राइट?
अब हम देखें तो द सब्सटेंस, मैं आपको एक एक वर्ड इसलिए पढ़ लिख के बताती हूँ ताकि आप उसको समझो, और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप उसको वहां से खुद से भी पढ़ सको। द सब्सटेंस विच गेट्स absorbed absorbed is referred to as absorbent, अभी हमने पढ़ा आगे, and the surface over which absorption occurs is called adsorbent. Right? अब ये जो एब्जॉर्प्शन वर्ड है ये क्या है? ये सरफेस फिनोमेना, फेस है सरफेस का। एक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे? If gas like oxygen, hydrogen, carbon monoxide, chloride, ammonia and sulfur dioxide is taken in a closed vessel, conical flask containing powdered charcoal, it observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreased. The gas molecule concentrated at the surface of the charcoal, that is gas, are absorbed at the surface. Okay? अगर हम इन गैस को एक वेसल में लेंगे विद इसके साथ चारकोल के साथ, तो हम देखेंगे कि प्रेशर जो होता है गैस का वो डिक्रीज कर रहा है और चारकोल के फेस पर कुछ गैस मॉलिक्यूल जमा हो रहे हैं। इसका मतलब गैस जो है वो एब्जॉर्ब है सरफेस पर, राइट? इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक टाइप, say methylene blue, when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turns colorless. The molecule of the dye accumulate on the surface of charcoal are absorbed. इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। The process of removing an absorbed substance from a surface called desorption. मैंने बताया था रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाता है? desorption. Difference between adsorption and absorption. हम यहाँ पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट? हम एक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन को एक बार फिर से देखते हैं। एक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या है? Absorption is due to the fact that the surface particles of the adsorbent are not in the same environment. राइट? इससे ये होना चाहिए एक्शन। दूसरा क्या हो सकता है? द प्रोसेस अनबैलेंस फोर्स और रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स, जो एब्जॉर्बेंट होता है ये करता है, दे possesses unbalanced force और residual attractive force। ये बहुत ही अनबैलेंस फोर्स रखता है या फिर अट्रैक्शन फोर्स रखेगा। और क्या हो सकता है? These forces of adsorbent are responsible for attractive, मतलब कि इन फोर्सेस के थ्रू जो होता है वो पार्टिकल जो होते हैं एब्जॉर्बेंट के वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है? अगर हम इसका थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट देखें, वो भी अभी हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट क्या होता है। डिफरेंस
adsorption and absorption. In adsorption, the substance is concentrated only at the surface and does not penetrate through the surface to the bulk or absorbent, while the absorption is substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid. Okay, the दूसरा difference क्या है? The distinction can be made between absorption and adsorption by taking example of water vapor. Water vapor are absorbed by anhydrous calcium chloride but absorbed by silica gel. Okay, both absorption and absorption can take place simultaneously. Also the term sorption अभी हम आपको बता चुके हैं. ठीक है, एक चीज और हम जानते हैं कि the extent of adsorption increases with the increase of surface area per unit mass of adsorbent at a given temperature and pressure. Right, beta? Mechanism of adsorption. Inside the absorbent, all the forces acting between. अभी हमने आपको बताया ऐसे force लगते हैं repulsion. Okay. Another important factor absorption is the heat. अभी हमने thermodynamic aspects बताने थे. ठीक है, thermodynamic aspects बताने हैं, वो हम आपको बताते हैं. Thermodynamic aspects क्या होते हैं? इसमें कुछ thermodynamic aspects लगते हैं, जैसे अगर हम पहला देखें तो एंट्रोपी decreases during adsorption means डेल्टा एस जो होगा वो नेगेटिव होगा. दूसरा देखें तो for the process to be spontaneous डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा. डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा. डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी, वो भी नेगेटिव होगी. सी देखें डेल्टा एच should have sufficiently high negative value as minus EBS is positive. Okay. Last देखें तो hence adsorption is an exothermic process. याद रहेगा एब्जॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. याद रखिएगा, नीट का भी क्वेश्चन है. ठीक है. टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन. There are mainly two types of absorption of gases on solid. If accumulation of gas on the surface of a solid occur on account of weak van der Waals effort, absorption is termed as physical and physioabsorption. See? And when the gas molecule of atom are held in the solid surface by chemical bond, absorption is termed as chemoabsorption and chemical absorption. Sometimes these two processes occur simultaneously. It's not safe to examine the type of absorption. The physical absorption at low temperature may pass into chemoabsorption as the temperature is increasing. Right? Molecule of hydrogen then dissociate to form hydrogen atom which are held on the surface by chemoabsorption. ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि depending upon the
depending upon the nature of forces. In short, कह सकते हैं depending upon the nature of forces which hold the molecule of the adsorbate मतलब गैस on the surface of the adsorbent मतलब solid. ठीक है बेटा, इन शॉर्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं. अगर हम देखें तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन. फर्स्ट फैक्टर को अफेक्ट करता है नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट. जो उसको एडसॉर्ब कर रहा है उसका नेचर. ठीक, नेचर ऑफ adsorbate and third temperature. ठीक है, थर्ड टेम्परेचर. अगर हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस लिखें, कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं. एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन सिंगल पॉइंट पे याद रखने वाला है. फर्स्ट इन गैस मास, यहाँ पर कोल माइंस. दूसरा टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी. थर्ड रिमूवल of coloring matter from solution. Next, blue lake test. हम बताएंगे आगे ब्लू लेक टेस्ट क्या होता है. फ्लोटेशन, ये आप हाई स्कूल में पढ़कर आए हैं मेटलर्जी में फ्लोटेशन प्रोसेस को. ठीक है बेटा. क्रोमेटोग्राफी ये भी हम पढ़ेंगे आपको. क्रोमेटोग्राफी. फिर है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. मैन्युफैक्चर ये भी आप ट्वेल्थ से पढ़कर आए हैं ऑफ अमोनिया. आपके सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो पढ़े हुए हैं. हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल ये हम पढ़ेंगे. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम इसको भी हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट है क्यूरिंग डिसीज. drugs are used to kill the germs by getting absorbed on them. ये इसके कुछ एप्लीकेशन. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ physioabsorption. Lack of specificity. A given surface of adsorbent does not show for a particular gas as the van der Waals force or universal. Nature of absorbent, reversible nature, surface area and enthalpy of absorption. ये हमने बता दिया क्या चीज होगा. Chemoabsorption, high specificity and irreversibility. Chemoabsorption high specific and it will only occur if there is some possibility of chemical bonding between both adsorbent and absorbent. Irreversibility, chemoabsorption involve compound formation, usually irreversible in nature. Chemoabsorption is exothermic process, but the process is very slow at low temperature on account of high energy of activation. Okay? Physioabsorption is also absorbed in very low temperature, may change the chemoabsorption at the high temperature. Right, beta? Surface area, like physical absorption, chemoabsorption will increase surface area of absorption. Enthalpy of absorption is high at the involved chemical bond formation. अब दोनों का हम डिफरेंस फटाफट पढ़ लेते हैं. physical absorption and chemoabsorption. The force, physical absorption, the force operating in the case are the van der Waals force
van der Waals force. ठीक, hemoabsorption में क्या है? The force operating are chemical bond, मतलब ionic bond और covalent bond. The heat absorption is low, about 20 to 40 kilojoule, and इसमें 40 to 400 है. ये reversible है, ये irreversible है. Does not require any activation energy. इसमें activation energy होती है. Low temperature and decrease with increase in temperature. Absorption first increase with decrease in temperature. ठीक. It is not specific in nature all gases. It is specific in nature in all gases. It increases with the increase surface area with increase in the surface absorbing. It forms multi-molecular layer. It forms unimolecular layer. Okay, beta. Absorption isotherm. Absorption isotherm. The variation in the amount of gas absorbed by the molecule with pressure at constant temperature can be expressed by a main curve termed as the absorption isotherm. Okay? This is X by M is equal to Kp 1 by 2 and is greater than 1. Where X is the mass of gas absorbed on the mass M of the absorbent at pressure P. K and N are constant, which depend on the nature of the absorbent and the gas at the particular temperature. This is the graph. Means X by M क्या है? M क्या है? मास है. Means प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ ये डिक्रीज करता है. ठीक है. The relation is the form of curve which mass of the gas absorbed gram of the absorbent is plotted against pressure. See, there is a decrease in physical absorption with decrease in temperature. ठीक है. ये याद रखिएगा. There is a decrease in physical absorption. मतलब कि ये indirectly proportional है. ठीक है. देखो कुछ टर्म्स हैं. When 1 by n is equal to 0, the absorption is dependent of pressure. See? When 1 by n is equal to 1, X by M is equal to Kp, that is X is directly proportional to P, the absorption varies directly with pressure. Both the conditions are supported by experimental results. This can be explained by Fruitlich isotherm. This thus it fails at high pressure. Absorption from solution. Solids can absorb solutes from solution also. When a solution of acetic acid in acetic acid is shaken with charcoal, of a part of it is absorbed by charcoal and concentration of the acid decreases in the solution. Some solution phases have the extent of absorption decrease with increasing temperature. Okay? The absorption increases with increasing surface area of the absorbent. Okay? The absorption depends on the concentration of the solute in solution. The extent of absorption depends on the nature of the absorbent and absorbent. ये आपकी Fruitlich equation आ गई. Approximately ये है आपकी Fruitlich equation. Where C is the equilibrium constant. यहाँ पे equilibrium constant है. That is when absorption is complete on taking logarithm. The above equation B है. एप्लीकेशन हमने बता दिया. एप्लीकेशन आपको सारे एप्लीकेशन बता दी. क्रोमेटोग्राफी की आपको हमने बता ही दिया लमसम. अब आता है कैटालिस्ट. कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट क्या होते हैं? पहले तो हम जान लें कैटालिस्ट होता क्या है. कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट वो होते हैं जो आपकी रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी करते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. मतलब इट refers to the process of altering the rate of reaction by using a catalyst. The catalyst refers to a substance which alters the rate of reaction on
on without itself getting confused in the reaction. Confused in the reaction. Up there are two aspects. First क्या है? Activity. मतलब it is ability of catalyst to alter the rate of reaction. ठीक है? It can be increased. It is the ability of catalyst to alter the rate of reaction. It can be increased by increasing the surface area of a catalyst. दूसरा एक्सपेक्ट क्या है आपका? दूसरा है सेलेक्टिविटी. मतलब it is the ability of catalyst to guide the reaction towards a particular product. मतलब ये अपने आप सेलेक्ट करवाने में हेल्प करता है. देखिए, पोटेशियम क्लोरेट when treated strongly decomposes slowly into diol. अब डिपेंडिंग ऑन दी अगर हम देखें तो डिपेंडिंग promoters and poisons पहले पढ़ लें. Promoters are substances that enhance the activity of catalyst, while poisons decrease the activity of catalyst. Promoters क्या करते हैं? Enhance the activity of catalyst, while poisons decrease the catalyst. अब आपके दो तरह की डिपेंडिंग ऑन द नेचर फेज कैटालिस्ट और टू टाइप्स, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस. होमोजेनियस कैटालिस्ट क्या होते हैं? When the reactant and the catalyst are in the same phase, मतलब liquid or gas, the process is that to be homogeneous catalyst. The following are the some examples. This is oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide. This is catalyst. Catalyst क्या है इसमें? कौन है catalyst? इसमें catalyst is lead chamber. Nitrogen as the catalyst. ये जो है आपकी catalyst as a gas. हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथल में HCl आपका कैटालिस्ट है. हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर में सल्फ्यूरिक एसिड आपका कैटालिस्ट है. हेटेरोजेनियस देखें तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में प्लैटिनम कैटालिस्ट है, फेरस कैटालिस्ट है, अमोनिया में प्लैटिनम कैटालिस्ट है, वेजिटेबल्स भी बनाने में निकल कैटालिस्ट. एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ heterogeneous catalyst. This theory explains the mechanism of heterogeneous catalyst. The theory known as absorption theory of catalyst was that reactant in gaseous state or in solution are absorbed on the surface of solid catalyst. The increase in concentration of reactant on the surface increase the rate of reaction. The rate of absorption utilize the rate of reaction enhancement. Mechanism involved in 5 steps. ठीक है, अभी हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे. पहला स्टेप क्या है? डिफ्यूजन और रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट. ठीक है. और दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल on the surface of catalyst. Next, occurrence of chemical reactions on the catalyst surface through formation of an intermediate. Next, resorption of reaction product from the catalyst surface and thereby making the surface available again more reaction. इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं शॉर्ट करने के लिए. हम ऐसे भी लिख सकते हैं
मेथड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट हम लिखते हैं, रिएक्शन रिएक्शन between reaction between the reactant while remaining at dot on the surface of catalyst. नेक्स्ट हमारा है सॉलिड कैटालिस्ट की एक्टिविटी। द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ chemoabsorption to a large extent. The reactant must get absorbed reasonably strongly on the catalyst to become active. However, they must not get absorbed strongly, then they are immobilized and other reactants are left with no space on the catalyst. ये है आपका एग्जाम्पल। सेलेक्टिविटी हम बता चुके हैं, ये कैटालिस्ट अपने आप से सेलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल मेथनॉल एंड methanol. A catalyst highly selective in nature. As a result, a substance which acts as a catalyst in one reaction may fail and catalyst another reaction. Shape selectivity catalyst by zeolites. The catalyst reaction that depend upon the pore structure of the catalyst and size of reactant and product molecule is called shape selective catalyst. Zeolites are good shape selective catalyst because of their honeycomb like structure. Honeycomb मतलब इस टाइप स्ट्रक्चर होता है। दिस इज, अगर आप हनीकॉम्ब देखो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कुछ, मधुमक्खी के छत्ते को देखो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारी बेंचिंग रिंग्स होती हैं, ठीक। They are microporous aluminum silicate with three-dimensional network of silicates in which some silicon atom are replaced by aluminum atom, replaced by aluminum atom. This is aluminum oxygen silicon ring. For reaction taking place in zeolite depend upon the size and shape, reactant and product molecule as well known as pore and cavity of the zeolite. They are widely used in the petroleum industries for cracking hydrocarbons. Right? Characteristic of enzyme catalyst, high efficient. पहले हम देखें एंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है। एंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है? Enzymes are complex nitrogen compounds. ये चीज याद रखिएगा, जितने भी एंजाइम होंगे उसमें नाइट्रोजन जरूर होगा। Compounds which are called biocatalyst. इन एंजाइम्स को कहते हैं बायोकैटालिस्ट। That is, they catalyze the various biochemical reactions occurring inside the body of living organism. मतलब हमारी ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स की बॉडी में जो इंटरनल रिएक्शंस होती हैं उनमें एंजाइम कैटालिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। Enzymes are most active between 25 degree to 40 degree centigrade and pH range कितनी होती है 5 to 8. Okay, it increases in the presence of activators and coenzymes. तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, मान लिए किसी ने बाहर से पुश किया तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्टिवेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक्टिवेटर्स आर like sodium, like magnesium, like cobalt. Inhibitors or poisonous
destroy the catalytic activity of enzyme. Okay बेटा, characteristic of enzyme catalyst, highly efficient, highly specific, highly active under optimum temperature बता चुकी हमने, highly active under optimum pH ये भी बता दिया, increasing activity in presence of activator and pointer ये भी बता दिया, and express the inhibitor or poison. Mechanism of enzyme catalysis. There are a molecule, number of cavities present on the surface of colloidal particle of enzyme. ठीक है, these cavities are the characteristic shape of possessive group. This is the group. These are actually the active center of the surface of the enzyme particle, the molecule of the reactant, which has complementary shape. A cavity just like a key which fits into a lock. जैसे कि चाबी और ताला होता है, उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका. देखिए, ये दिया हुआ है आपका एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये एकदम की की तरह है, एकदम लॉक की तरह है, ये एक्टिविटी साइट है. ठीक है, E प्लस S रिवर्सिबल रिएक्शन है, E माइनस S इरिवर्सिबल रिएक्शन, E ऑन प्रोडक्ट. देखिए, E प्लस S एंजाइम प्लस सब्सटेंस कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मिल करके बना देते हैं जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है. दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंड इन दोनों को जब अलग किया जाता है तो एंजाइम सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट मिल जाता है, लाइक ताला खुल जाता है. Thus the enzyme catalyst reaction may be considered two process. Two step binding the enzyme to substrate to form an activated complex. This one जैसे हमने बताया कि ताला लॉक, सिंपल एग्जांपल, लाइफ का एक सिंपल एग्जांपल लीजिए. जब आप लॉक लगाते हैं तो की लॉक के अंदर गई, ये हो गया enzyme and substrate, and decomposition of the activated complex to form product. मतलब जब ये ताला खुला तो एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो गए, मतलब ताला ओपन हो गया. ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा. हम इसके बाद नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कोलाइड्स पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे हार्डी-स्पूरे रूल. ठीक बेटा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. एंड कुछ भी हो, आपको कोई भी क्वेरी होती है आप प्लीज हमें मेल करिए, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच.